Hey guys, what's up and welcome back to स्टील राइजिंग। सो लास्ट एपिसोड में अपन साइड मिशंस कर रहे थे, जितने भी साइड मिशन थे सब करने वाले, क्योंकि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ चुका है। यानी कि अगर अपन मेन स्टोरी आगे प्रोग्रेस करें तो अपन ये साइड मिशन वापस कर नहीं पाएंगे। एनीवेज, ये लोकेशन पे 3 साइड मिशन थे, जिनमें से 2 साइड मिशन आगे डेवलप होके 2 अलग एरिया में जा चुके हैं। तो एट द मोमेंट अपन यहाँ पे जहाँ पे है, यहाँ पे जो साइड मिशन चल रहा है ये है ला फाइते मैरिट करके जो बंदा था जिससे अपन यहाँ पे मिले थे ये टनल्स में। उसने बताया था कि लाफाइटे के कुछ इवल प्लान्स है, वो डिक्टेटरशिप वगैरह करना चाहते हैं, वो खुद को ऐसा लीडर बनाना चाहते हैं। तो उसको अनफोल्ड करते हुए अपन यहाँ पे पहुंचते हैं, क्लूज इकट्ठा करते हैं। तो लाफाइटे के ग्रुप के यानी कि उसके फॉलोअर्स के वहाँ से वहाँ पे जहाँ पे लड़ाई हुई थी ऑटोमैट्स के साथ, उधर उनके डेड बॉडी से कुछ क्लूज मिलते हैं जहाँ पे उनका एक सीक्रेट हेडक्वार्टर्स है। एंड कैप्टन लिफायरे, जो भी इसका नाम है, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो, इनके लोकेशन के आइडियाज क्लूज अपन को मिलते हैं। तो अभी अपन यही दोनों लोकेशन ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि अपन को और क्या पता चलता है लाफाइटे के बारे में। एनीवेज, अपन सेंट क्लाउड में भी गए थे, जो अपना सबसे स्टार्टिंग का ट्यूटोरियल एरिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्लोज्ड या हिडन लोकेशन है जो अपन स्टार्टिंग में एक्सेस नहीं कर सकते। तो अपन यहाँ पे वापस गए थे, यहाँ से एक अपन को वेपन मिला, जो तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक फुलमिनेशन हैलबर्ड है। तुम्हारा काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एल्केमी बिल्ड के लिए, एक हाइब्रिड के लिए अच्छा वेपन हो। बाकी वहाँ पे और भी लोकेशंस जो अपन अभी एक्सेस नहीं कर सकते। मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे ट्राई किया जितने भी एरियाज हैं, कुछ मिस हुआ है या कोई ग्रैपल हो गया समथिंग, बट वहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो चांस है कि मे बी गेम में आगे कुछ साइड मिशन या कुछ आएगा जो अपन को यहाँ के जितने भी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन बचे वहाँ का एक्सेस देगा। तो फिलहाल अपन उसके बारे में कुछ चिंता नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे जो अपने पास सीधा सामने सामने जो भी साइड मिशन पड़े उसको एक एक करके खत्म करते हैं। ओह, वो दोनों उस तरफ है। अरे यार, पिछले एपिसोड में मैं वो साइड था एंड वहां से इधर आने की कोशिश कर रहा था। ये एपिसोड में मैं इधर फंसा हुआ हूँ। और मैं कूद के आया था, चढ़ सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो एक अंडरग्राउंड की तरफ है। आई थिंक वो वाटर टनल पे अपन नीचे लास्ट एपिसोड में गए थे पहले। या एक उस तरफ है, एक उधर ऊपर है। नीचे वाले एरिया में जाके आए क्या? या एक्चुअली यहाँ पे अपन पिछले एपिसोड में पहली बार आए थे, तो उस टाइम मिशन ऑपोजिट साइड में था, उस साइड में था। मैं वापस अपन को इधर ही भेज रहा था। ये लोकेशन कैसे रह गया? काफी ज्यादा हिडन था। ऑपोजिट साइड पे बोलेगा, यप। ओ, बेसबॉल बेसबॉल बैट जैसे घुमा रहा हूँ।
सांप वाले जो एनिमीज होते हैं ना वो सबसे स्नीकी होते हैं, सबसे ज्यादा हाइड किए हुए भी वही होते हैं, दिखते नहीं है जल्दी। कभी कभी ये लोग ऐसे दीवार पे भी चढ़ के बैठे रहते हैं। This gate has a lock that requires some combination of 4 letters. I should follow Capitaine Lefebvre's footsteps. He and his men withdrew to the Société des Amis de Noir. They must have gone towards the Châtelet. I doubt they survived their retreat. The hell? फिल्मी की वो सामने जो रास्ता दिख रहा है मैं वहां से कैप्टन तक जा सकता हूँ, वरना मुझे पूरा उतर के ओह चलो सही है। यार ऐसा पता होता तो पहले कैप्टन से जाके मिल के आते थे। आई डोंट थिंक कैप्टन जिंदा होगा, उसकी डेड बॉडी पड़ी होगी कहीं पे तो होगा। The poor souls. They died just steps from their goal. York, from Major What does Margaret to that mean? Captain Blair, you are ordered to do everything in your power to stop the advance of enemy troops at the chalet. If necessary, sabotage the system that opens the door. York. Okay. So we got the password. Now open access कर सकते हैं उसको। आखिरी के कुछ साइड मिशंस बचे हैं, थोड़े से काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड मिशंस है, मतलब मल्टीपल इवेंट्स अपन को करने पड़ रहे के बाद। पानी बहुत खतरनाक है गेम में, अगर तुम पानी में गिरे तो इंस्टेंट डेथ है। इनको तैरते आता नहीं है, वैसे ये सारे ऑटोमेट्स इतने हैवी, आई डोंट थिंक ये लोग तैर सकते भी होंगे। This place must be studied carefully. The document bears the signature of the Marquis de Lafayette, so the rumors were true.
The Garde Nationale wasn't formed spontaneously. All of this was carefully orchestrated. It is high time the Marquis de Lafayette explained himself. Yep. तो एक्चुअली जो रूमर्स थे अपन को जो मारेट बता रहा था वो सही है कि लाफाइटे अपना एक अलग से आर्मी बना रहा था। तो ज़्यादा लोगों को वैसे ही लगेगा कि ये किंग के अगेंस्ट रिबेलियन कॉज करके अपना एक डिक्टेटरशिप खड़ा करना चाहते हैं। अब वो बचा हुई चीज़ लाफाइटे बताएगा कि एक्चुअली उसका मोटिव क्या था। All officers are insist yet again on the necessity of putting a stop to the action of citizen Marit. Marit वही same बंदा है who continues to evade justice. No matter how successful our military actions are, we will be unable to restore public peace as long as this troublemaker remains free to sow the seeds of discord. Therefore, during our operation, be very careful that the person concerned does not take advantage of the chaos to slip through our fingers. Take him alive if possible, but use all means necessary if he refuses to cooperate. Lafayette. Okay. We, the officers, soldiers, and veterans of the Saint Augnes Regiment, liberators of the American people, swear allegiance to General de Lafayette, the only man in the kingdom who is capable of restoring peace. We hereby vote to follow him at all costs, and political endeavors will prevail by any means necessary. Kind of एक oath था शायद वो उसके followers के लिए लिखा गया था. आइटम मिला था ना मैंने स्क्रॉल डाउन कर दिया जल्दी में आई थिंक ये हाँ यही था 75 ओके आर्मर बढ़ा रहा है ये फुलमेशन रेजिस्टेंस कम कर रहा है फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस बढ़ा है लूट मल्टीप्लायर कितने से कम कर रहा है और एक वेपन भी मिला था आई थिंक हेवी वेपन है डिस्को ब्लोस व्हील yep power affinity heavy weapon clearly and Ignatius eternal mechanism launches a disc at the enemy causing physical damage and light attacks से heavy attacks से हम heavy attack क्या मुझे लगा इधर स्लैम होगा रनिंग अटैक ओह रनिंग अटैक बढ़िया रनिंग अटैक हेवी और लाइट सेम रहते हैं शी काइंड ऑफ उसको बाइक की तरह यूज़ कर रही है रनिंग अटैक बहुत बढ़िया लग रहा है एंड डॉज अटैक डॉज लाइट था वो ये डॉज हैवी अटैक तो देखना रहेगा नॉट बैड आई थिंक अच्छा सा डैमेज कर सकते हैं स्ट्रेंथ बिल्ड के लिए अच्छा सकते हैं इग्निशन इंटरनल मैकेनिज्म लॉन्चेस अ डिस्क एट द एनिमी कॉजिंग फिजिकल डैमेज एंड थ्रोइंग देम ऑफ बैलेंस ये काइंड ऑफ मुझे लग रहा है थोड़ा रेंज भी होगा ये डिस्क फेंक रहा है ना उसके बीचों बीच जो है तो थोड़ा रेंज भी होना चाहिए उसमें यूनिक थोड़ा सा हैवी वेपन वालों को रेंज भी देते हैं उसमें ऐसे स्टार्टिंग में तुम्हें एक हेलबर्ड मिल जाता है जिसमें एक ऐसे शूट करने का मैकेनिज्म है तो हेलबर्ड भी तुम स्ट्रेंथ बिल्ड के लिए यूज़ कर सकते हो So I guess that wraps up all the side mission ये लोकेशन का अब लाफाइटे से बात करना होगा फाइनल पार्ट उस मिशन का यप रिपोर्ट बैक टू मार्क्यूस लाफाइटे वो कोई दूसरे मिशन का है एंड कन्फ्रंट लाफाइटे ये अभी वाले मिशन का तो एनीवेज अपन ये दोनों लोकेशन पहले जाने वाले हैं फिर अपन यहाँ पे जाएंगे एंड रैप अप हो जाएगा सारी साइड मिशन तो यहाँ से निकलना है
अरे काफ़ी सारे लोकेशन ना ये गेम में आइडेंटिकल लगते हैं, एंड जब तुम्हें ऐसा कोई सोल्स लाइक गेम बना रहे हो, ओह शिट, दैट इट्स रियली नेसेसरी कि तुम्हारे लोकेशन सारे यूनिक रहे। तो उस मामले में गेम में थोड़ी सी कमी है। कुछ कुछ लोकेशन काफ़ी बढ़िया बने, लेकिन कुछ कुछ लोकेशन कभी कभी काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिकल लगते हैं। ऐसे गेम्स में यूजुअली ऐसा कोई एकदम डिटेल्ड मैप नहीं होता। जैसे मुझे बस पेरिस का एक बड़ा सा मैप दिया गया, ये अलग अलग लोकेशंस का इंटरनल मैप कुछ है नहीं, तो मुझे रास्ते याद रखने पड़ते हैं। तो फिर अगर तुम यूनिक बनाओगे तो प्लेयर को थोड़ा सा आसानी हो जाती है याद रखने के लिए कि लोकेशन कौन कौन से है। फिर चले, ये वाला कौन सा था, इन्वेस्टिगेट द सीन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये वो स्लेव्स वाले मिशन का साइड मिशन का कंटिन्यूशन है। चलते हैं यहाँ पे। ये अपना काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो सेंट क्लाउड के बाद, ट्यूटोरियल रीजन के बाद सबसे पहले अपन यहीं पे आए थे। यहाँ के एनिमीज उतने कुछ टफ होने नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था जो मिनी बॉसेस थे वो एक्चुअल बॉसेस है गेम के, एंड मुझे लगता है ये काफ़ी आसान है, बट बाद में पता चला कि टाइटन बॉसेस अलग है। जैसे टाइटन बॉसेस भी देखे जाए तो ऐसा अपने आप में बहुत टफ है नहीं। एक चीज़ मुझे ये लगता है कि गेम में जो ग्रेनेड्स है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड है, उनको थोड़ी सा नर्फ करना चाहिए, क्योंकि तुम ग्रेनेड्स तुम्हारे पास काफ़ी सारे हो जाते हैं, एंड तुम बॉसेस को भी फेंक फेंक के उनको आराम से दूर से खड़े रह के फेंक फेंक के आइस डैमेज, फायर डैमेज, ये सब दे सकते हो। तो ग्रेनेड्स काइंड ऑफ ओवरपावर्ड है। टाइटन बॉसेस में भी शायद आई थिंक मुझे बिशप ही था जिसने थोड़ी सी दिक्कत दी थी, बाकी सब उतना कुछ हुआ नहीं था। बिशप को आई थिंक तीन चार चार अटेम्प्ट कुछ लगे थे। थोड़ी टाइटन बॉसेस दो अटेम्प्ट वगैरह से बन गए, तो दो या एक। जो आखिरी टाइटन बॉस को हराया सेंचुर, वो तो कुछ था भी नहीं, वो तो एकदम चोमू सा निकला। ओ ये लोकेशन मुझे याद है, आप लोगों को ये लोकेशन याद है? तो जाके बहुत देर खड़ा था, मैं बता रहा था यहाँ पे आगे जाने का रास्ता भी है, बट मैं जा नहीं पा रहा हूँ, ये डोर बंद था। वो कट सीन फाइनली ये खुला। एक्चुअली एक एपिसोड के स्टार्ट में अपन इधर आते हैं और मैंने 10-15 मिनट यहाँ पे वेस्ट किया था। कैलिस्ट्रो, यप। Don't move. Ah, that cursed dancer! May you be devoured by rust! किसको भेज रहा है लड़ने के लिए?
टेक डाउन द ओके, टेक डाउन कैलिस्ट्रो इधर आ रहा है। एक और साइड मिशन होना चाहिए ना। अच्छा एक ही है क्या? अच्छा मुझे लग रहा था वो दो अलग अलग साइड मिशन होंगे, नहीं कि कैलिस्ट्रो का एक है एंड विजिट द साइट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एक है, बट दोनों एक ही साथ। वो डेड ट्री जो था वो था विजिट द साइट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड कैलिस्ट्रो भी अपन को उधर ही मिला। इधर देखना तो पीछे कुछ I was thinking कैलिस्ट्रो फाइनल बॉस होगा। ये दो है यार। तो फायर वाला है और फायर वाले पे मैंने बता था ना, क्योंकि स्टार्टिंग जोन है इसलिए एनिमीज उतने टफ होने नहीं चाहिए। तभी फायर वाले को फायर पड़ रहा है, ये तो मर जाएगा अभी। काफी सारे लोग पड़ी इधर उधर। Slipped through my fingers. Fortunately, he was unable to take his things with him. कैलिस्ट्रो भाग गया। मैं वही बोल रहा था कि कैलिस्ट्रो मुझे फाइनल विलन लग रहा है, तो उसको यहाँ पे कैसे अपन हरा लेंगे। चलो देखते हैं उसके बारे में अपन को क्या इंटेल मिलता है, एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ इंटेल मिलता है क्या। Oh, this one block, that's nice. इन्हें अच्छा लग रहा है। एंड्योरेंस +5 कर रहा है, लेकिन आर्मर वगैरह -25। एंड्योरेंस बिल्ड के कपड़े हैं। ओ The sleepless slaves. They meant the automats. Feeding off the blood of innocent people. Monsieur Raymond was completely mistaken. I must inform him. That your doubts might be allayed, that I have taken the liberty of preparing. I repeat, my mechanical labors are tireless, but अच्छा स्लीपलेस लेबर्स मतलब ये कोई स्लेव वगैरह नहीं बना रहे, ये जो रोबोट्स बना रहे थे उन्हीं को ऐसा स्लीपलेस स्लेव्स करके नाम दिया गया है। तो मसियो रेमंड को बोल रहा है ओके की टू टोर्ड ये कौन सा लोकेशन है, कहीं का तो दी मिला अपन को। Possibly comment, who do you think I am? I can read between the lines and I can see through your game. It wasn't. You must also harass me even from a distance. I command you, Monsieur, not to write to me again. Rest assured that you will get nothing from me and that I will take the secrets you demand of me to the grave. Moreover, for the last time, I strictly forbid you to use what I taught you for the criminal purpose that you have. For the salvation of his soul, that is all I can give you. Dr. Franz Mesmer. ये क्या बोल के गया, ये मैं समझ में नहीं आया ये लेटर में क्या लिखा है। ओह ये एरिया मुझे पता है। अगर की वो तो की किधर यूज करना है मेरे को नहीं पता। दोनों की अभी अपन अगर रिपोर्ट बैक करेंगे उसके बाद ये लोग और मिशन ऐड ऑन देंगे। लाफाइडे का मिशन तो मुझे नहीं लग रहा कुछ और ऐड ऑन आएगा, ये वाले मिशन का पता नहीं।
तो लगाता है कि उसके अंदर लूट वूट है या कुछ। कुछ नहीं है। एक ओरिकैल का इंगॉट चाहिए, मेन बॉस को हराने के बाद मिलेगा। दोनों 4 बार अपग्रेड किया है मैंने। आई वंडर की 4 मैक्स है क्या? 2 कीज है क्या? मैं और कीज ले सकता हूँ? वी कैन बाय परचेस। ये लो, ये भी उठा लेता हूँ। तो अपना वेपन अभी मैं अपग्रेड कर सकता हूँ जब मेरे पास एनिमा आ जाए। Anyways, let's upgrade the module slot. Grade 2 lasting affliction module, grade 2 endurance module. So endurance के जगह पे आप पे अपन वो लगाएंगे। एक था डैमेज वाला, ग्रेड 3 वाला इंस्ट्रक्शन। मॉड्यूल significantly increases physical damage. Yep, nice. We will get more damage out of it. स्टैमिना, अभी मेरी एचपी ज़्यादा लग रही है। मैं सोच रहा हूँ अभी मुझे जो भी पॉइंट मिलेगा ना स्टैमिना में डाला जाए। स्टैमिना ऐसे अपन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ती है नहीं, क्योंकि अपने वेपन्स जो है लाइट वेपन्स है, तो उतनी स्टैमिना की ज़रूरत पड़ती है नहीं। बट स्टैमिना में सोच रहा हूँ एक बार वो जो छोटा सा बार दिख रहा है ना उसको फुल कर देंगे, थोड़ी आसानी पड़ेगी। बाकी वेपन को अपग्रेड करने के लिए 7500 चाहिए, वो मेरे पास है नहीं। लेकिन अपन को वो मिल चुका है ओरिकैल का, तो अभी बस अपन को एनिमा चाहिए। ट्रैवल, ट्रैक डाउन कैलिस्ट्रो, फाइंड जोसेफ। अच्छा, ट्रैक डाउन कैलिस्ट्रो इधर था, तो वो दूसरी लोकेशन पे बस स्लीप एक्सपेरिमेंट का साइड मिशन दैट उधर मुझे कैलिस्ट्रो दिख गया, तो मैं इन दोनों के साथ कंफ्यूज हो गया। तो कैलिस्ट्रो एक्चुअली अपन को यहाँ पे मिला है। ये वो कौन से मिशन का कंटिन्यूशन है पता? तो अपन को एक निकोलस फैमिली का क्रिप्ट ढूंढना था, जहाँ पे कोई एक लेजेंडरी रेयर आइटम है जिसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है, बट वो बताया जाता है कि वो इटर्नल लाइफ वगैरह देता है। चांस है कि मैं भी उसी आइटम को यूज करके कैलिस्ट्रो इन रोबोट्स ऑटोमैट्स को कंट्रोल कर रहा हूँ। देखते हैं अपन को यहाँ पे कैलिस्ट्रो मिलता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से तो कैलिस्ट्रो भाग गया अपने से। दोनों पास पास में ही है, ठीक है। अरे भैया, बुक लग रही है ये लोकेशन फॉर सम रीजन।
थॉट कि अपन जंप कर सकते हैं। मेरे पे ऐसे जाने को भाई। Joseph Blasmo's workshop and Callisto और दूर है पूरा। वर्कशॉप अंडरग्राउंड में क्या? मतलब ये कौन सा लोकेशन है? अपन इधर पहले आए नहीं है शायद। अरे एक्चुअली करना नहीं चाहता था बट 2 बार हील मार दिया मैंने। अगर क्या ओके वो रहा वर्कशॉप। कैलिस्ट्रो भी उधर ही दिख रहा है।
फ्लैशबैक। You monster. What do you want with me? ये वोकॉन्सन की Was it डॉटर enough है, for you to steal my dancer? एथेनाइस। I'm merely obeying the king, mademoiselle. यूजीन वोकॉन्सन ना, जिसको अपन ढूंढते Don't उसकी be डॉटर है। afraid, you and your beloved machine will soon be reunited. I give you my word. Voila, here we are. Do you see that window? That's where she's waiting for you. Oh, एक सेकंड, what the fuck? Sale petite peste. I suggest you don't try that again. तो पता नहीं आपको कुछ आइडिया लगा कि नहीं, बट इसकी जो मशीन थी, Athenis. What could have happened to her in this workshop? यप, तो ये जो है अपन एजिस जो अपना कैरेक्टर है, ये क्वीन की बॉडीगार्ड होने से पहले वोकॉन्सन ने अपने डॉटर के लिए एज अ डांसर बनाए थे इसको। तुमने देखा होगा कैलिस्ट्रो से जब अपन ने आज के एपिसोड में एनकाउंटर किया था तो उसने बोला था यू कर्सेड डांसर वगैरह करके। तो अभी अपन ने फ्लैशबैक में देखा, वो उसको बोलता है कि यू विल बी रीयूनाइटेड विथ योर मशीन सून इन दैट वर्कशॉप। और अगर अभी तक आपको समझा ना हो, अपन जितने भी मेजर एनपीसीज कैरेक्टर्स को रिलीज किया है, उनकी सोल एक मेन बॉस के अंदर ट्रैप थी जिनको अपन हराते हैं, फिर उनको अपन एक बॉक्स में से रिलीज करते हैं। तो चांसेस है कि एथेनाइस, वो जो उसकी डॉटर है यूजीन वोकॉन्सन की, उसकी सोल अपने एजीज के अंदर ट्रैप्ड हो। एंड ये एक और रीज़न इसका ये है, अगर तुम्हें याद हो तो एजिस को ये सारे कैरेक्टर्स के नाम वगैरह पता है, इनके मतलब नाम नहीं, मतलब एजिस को जनरल ये लोकेशन का आइडिया है, एक दूसरे लोगों को कैसे मॉन्स्टर करके क्या बोलते हैं अपन एड्रेस करते हैं, वो सारी चीज़ें पता है। तो वो एजिस को कैसे पता है, ये एक बंदे ने इससे क्वेश्चन पूछा था, तो एजिस एजिस जवाब ये देती है कि उसको खुद नहीं पता कि उसको ये सारी चीज़ें पता कैसे है, ये एक्चुअल चीज़ है। तो ऑब्वियसली ये एक और चीज़ यही पॉइंट करते हैं क्योंकि एथेनाइस की सोल इसके अंदर है, तो इसको जनरल जो भी चीज़ है उन सबका आइडिया है अपने आप में। वापस जाने के लिए होगा ये। वहाँ से इसलिए नहीं नीचे कूद क्योंकि मुझे दूसरा ग्रैपल कुछ नहीं दिख रहा उधर, तो मुझे वही लग रहा है, इससे बोलो ना यू विल बी यूनाइटेड विद योर मशीन सून, चांस वही लग रहा है। Appears to be very old. I should show it to Abbe Grégoire. अबे ग्रिगोर जो है वो शायद अपन को पता सकते हैं क्योंकि काफी पुरानी लैंग्वेज में लिखा हुआ। ऐसे एक मशीन के अंदर ट्रैप करते हैं और उनकी सोल यूज करते हैं ये बड़े बड़े टाइटन्स को चलाने में। Monsieur the Comet, I regret the unforeseen difficulty of which you have informed me. If we do not put an end to it soon, the smooth running of our operation could be impeded. Louis, if you claim the dance, if as you claim the dancer has indeed left Saint Cloud for Paris, if she is attacking our machine's facility you describe, I demand that you discover as soon as possible the nature of the malfunction that allows her to ignore the orders she was given and learn why she has turned against us. लुइस कौन है? लुइस कौन है पता नहीं, कमेंट बताया मुझे। थाउजेंड कट क्लॉज बिस्मुथ क्लॉ, ओके। 1000 कट क्लॉ सुनने में नाम काफी बढ़िया लग रहा है। या मुझे लगा ही था एजिलिटी वेपन होगा। ब्लेड स्टॉर्म विद अ स्पेशल मूव 1000 कट क्लॉज इन्फ्लिक्ट बराज ऑफ ब्लोज इन क्विक सक्सेशन। तो ये तो काफ़ी बढ़िया वेपन हो जाएगा इमोबिलिटी बिल्डअप करने के लिए, तुम्हारे इसके लिए एजिलिटी नहीं टेक्स्ट बिल्ड के लिए।
क्या है इसमें? ओ भाई, अब है मतलब वुल्वरीन बन गई है तो नाइस, सही। एजिलिटी स्केलिंग है बट तो अपने काम पे है नहीं अभी। Balsamo. So that is the name that the Comte de Cagliostro uses to conduct his business discreetly. अच्छा, लुइस किंग का नाम है, 2 लेटर किंग ने कमेंट को लिखा था। कमेंट एक दूसरा कैरेक्टर जो अपने हाइड आउट में है उधर। किंग ऑफ फ्रांस एंड आवर बाय ग्रांट्स ऑफ गॉड परमिट मॉन्सियोर बेलास्मो जोसेफ एलाइस जोसेफ बेलास्मो बोर्न इन Palermo of 2nd June 100,000 years 140, okay, to use the name and title of Alexander comment D Calistro with full rights। अच्छा ठीक है। कैलिस्ट्रो का ओरिजिनल नाम ये है जोसेफ बेलास्मो, तो उसी का वर्कशॉप है ये। ओके, नो वंडर कैलिस्ट्रो पर भी यहीं पे मिलेगा। शॉर्टकट है, वापस जाने का रास्ता होगा ये। एड्रेस टू लेफ्टिनेंट जनरल डी पुलिस may review request that you contact the intendant of police of the okay taken he shall entrust her to the care of sisters who will ensure that she spends the rest of her life with the praise and contempt to have my daughter. These are the price of that poor woman shall be able to God willing to wash away the blight on her soul। किसने किसके बारे में लिखा है? मेरे भी उन्हें अपने डॉटर को किसी पुलिस इंटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ कहीं और सेंड किया था टू द अटेंशन ऑफ ओके। बट आई डोंट थिंक तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो लेटर इधर क्यों पड़ा हुआ है। एक और फ्लैशबैक। Rosette, you're so beautiful. You'll stay with me always, n'est-ce pas? Without you, mon ami, I'd be all alone. This box is covered in astronomical symbols. It's
It's no use. I can't get it open. I should show this to Monsieur B. Okay, time to return to the covenant, I think. वहाँ पे अपन को मल्टीपल लोगों से बात करना है. एक और चीज तुमने नोटिस किया तो अपन को एथेनिस के 3 फ्लैशबैक्स मिल चुके हैं, यानी कि उसके 3 आइटम्स मिल चुके हैं, यानी कि जब भी अपन उसे ढूंढ लेंगे अपन बॉक्स से उसके बॉडी को रिलीज कर पाएंगे. तो जितने भी लोगों के सोल को कैप्चर करके रखा होता है और उनके बॉडी को बॉक्स के अंदर डाला होता है, तुम्हें 3 बिलोंगिंग्स चाहिए होते हैं उनके, जो तुम्हें ऐसे कहीं ना कहीं पे पड़े हुए मिलेंगे. अगर तुम मिस करते हो तो तुम्हें वापस आके उन्हें ढूंढना होता है, बट यूजुअली गेम ऐसी जगह पे ही रखते हैं कि तुम मिस ना करो. Letter from Dr. Mesmer, Monsieur Lee Comet. I am still unsure of your true intentions. You and I both know that despite a dispute between us that led my flight, despite the distance that now separates us, what I witnessed you doing still haunts me, and now you seek my help to. You believe I will give you, whom I know to be capable of the worst, the means to deprive an innocent person of all free will and make them a docile servant. This leads me to believe, Monsieur, that you have lost all common sense, Doctor. Okay. I think ये वो slave army से related था, but slave army actually robots का बना हुआ था. So I guess, yep, that wraps up all the side mission. यहाँ पे आके बात करनी है. एंड ये लोग अगर अपन को ला फायदे से 2 एनकाउंटर्स है, एक तो उस वो जो आर्मी क्रिएट कर रहा था उसके बारे में बात करनी है, एंड ये कोई दूसरे मिशन का है. फिर अपन को बेली को ये बॉक्स दिखाना है जो अपन ने अभी जस्ट फ्लैशबैक में दिखा. एवे ग्रिगोर को अपन को एक लेटर मिला था जो पुराने भाषा में लिखा हुआ है, तो उसे डिकोड करने के लिए बोलना है. एंड रेमंड को वो स्लेव्स के बारे में कि स्लीपलेस स्लेव्स यानी रोबोट्स को ऑटोमेट्स को बोला गया, वो बताना है. ठीक है. काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं एंड इनके नाम ऐसे आसान भी नहीं है, ऐसे बड़े बड़े से नाम है. तो रेमंड जो कैरेक्टर तुम्हें दिख रहा है वो मुझे याद भी नहीं है बिल्कुल कि वो दिखता कैसे. बाकी सारे कैरेक्टर थोड़े बहुत याद है. रास्ता है जाने का, तो देखना चाहते हो ये किधर जाता है. एक्चुअली मुझे लग रहा है सेम जगह पे रूट मिस कर दी थी. में किधर निकल के आया? नहीं इधर नहीं आ रहा था. हाँ, मैं पूरा वापस चले गया एक्चुअली, उल्टा उल्टा. इसी चीज की बात मैं कर रहा था आज के एपिसोड के स्टार्ट में कि कुछ लोकेशंस बिल्कुल सेम सेम दिखते हैं.
उठा लिया मैंने फुलमिनेशन ग्रेनेड। तो मुझे वही लग रहा है अपन जब ये कि बाकी कैरेक्टर्स हैं उनसे बात कर लेंगे तो उतने में उसके बाद अपन को एपिसोड रैप अप करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे काफ़ी सारे कैरेक्टर से बातचीत करनी है, आराम से 10-15 मिनट लगेगा। तो ये सारे साइड मिशन रैप अप करते हैं तो अगले एपिसोड में अपन मेन मिशन बैस्टी की तरफ चलेंगे। ये साइड मिशन पहले करने का बस यही एक रीज़न था क्योंकि मैरिट अपन को बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, तो अपन बचे हुए जो पीछे जो साइड मिशन अपन छोड़ रहे हैं वो अपन नहीं कर सकते, इसलिए उनको पहले कर लिया अपन ने। फाइट से बात लास्ट में करेंगे क्योंकि उससे मल्टीपल चीज़ें पूछनी है। मेरे भी उससे बात नहीं करनी थी। Monsieur Bailly, I found this box with astronomical symbols on it. I believe it belongs to Vaucanson's daughter. Athenis' secret box. I built it with my own hands. It was my gift to her on her 15th birthday. I wasn't able to open it. Naturellement. Athenis and I are the only ones who know how. Allow me. You must arrange the planets the way they were aligned on the day of Athenis' birth. Voila, like this. What's this locket? Athenis is always wearing this. It contains a portrait of her late mother. She said it was her most cherished possession in all the world. To think, the poor child never knew her own mother. एक और फ्लैशबैक। You monster! What did you do to her? मैं पक्का श्योर हो जाऊंगा कि इतना इसका सोल इसने एजीज के अंदर डाला है। ये लो। तो जब भी लोगों का सोल Good God. Ludia, what happened? You froze the moment you touched the locket. I thought I'd lost you. I saw her. Athenis de Vaucanson. The Comte de Cagliostro has her. Mon Dieu. It is just as I feared. He bound her spirit to an automat. Please, say no more. Athenis. It is her spirit that animates you. Is it not? Yes. I believe so. Seigneur, quelle abomination. It is vital that you go and find Athenis as soon as possible. She is right in front of you. I am Athenis. Alas, I fear that is not entirely accurate. You know nothing of Athenis, Ludia. Nothing of her past, her joys, her suffering. Nothing of her love for her father. You are but the vessel that harbors the poor child's soul. जब भी ये लोगों का ऐसे सोल निकाल के किसी मशीन में डाल देते हैं तो उनकी मेमोरीज क्लियर नहीं होती है। ये अपन ने मल्टीपल बार जब ये बेली एंड दूसरे लोगों को बचाए वो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि वो लोग नाइटमेरिश ड्रीम में चले जाते हैं एंड फिर उनको कुछ याद नहीं रहता है। तो उसी वजह से इसको भी याद नहीं था कि
ये एथेनाइस है एक्चुअली ऐसा। Where can I find Athenis's body? God only knows. Although I assume that the Comte de Cagliostro is taking pains to keep her alive. This is certainly the only way to keep her spirit alive in you. The only way to free her is to find her body. Why was Eugène de Vaucanson imprisoned in the Bastille? Once he discovered the king's true intentions, he refused to continue cooperating with him. He refused to use his talents to create this abominable army. But the king didn't take kindly to his resignation. Eugène did manage to get a letter to me just before he was arrested. Here, take it. My dear Bailey, I am writing this to you in secret in great haste. My God, protect the mechanical messenger I am sending to you with this letter. They have taken me prisoner and have made no secret of the fate that is in store for me. I am to be sent to the Bastille where they intend to force me to reveal my final secret. Luckily, Athenis was able to escape, but they will certainly try to hunt her down. Go to her rescue if you can. If she falls into their hands, they will use her as an instrument of blackmail. But rest assured, they will not get anything more out of me, even if it means giving up my life. Adieu, your friend Eugene. ओके एक चीज मुझे अभी भी क्लियर नहीं है कि एजिस जो थी ये कैलिस्ट्रो के ऑर्डर्स को रेजिस्ट कैसे कर पाई, क्योंकि बाकी सारे मिशंस तो उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वो शायद अपन को आगे स्टोरी में पता चलेगा। एबे ओके रायमंड, ये इससे भी तो बात कर ली थी पहले, एबे से बात करते हैं। ये है एबे ग्रिगोर। ये Can I help you, Aegis? बारे में शायद अपन ऑलरेडी बात कर चुके। नोटबुक I found this notebook written in Latin. Indeed. Medieval Latin, to be precise. Oh, hold on. Bon sang. Aegis, what a find. This handwriting. I would recognize it anywhere. It's in Nicholas Flamel's own hand. Give me some time to study this, and I'll tell you what I'm able to glean from it. Have you finished reading the notebook, mon père? Yes, Aegis, and what I learned from it puzzles me. In this diary, Flamel tells of 3 journeys. 3 journeys into what he calls the in-between. A strange world filled with wandering souls. Tormented spirits that are unable to ascend to heaven. This world. It's where Cagliostro's victims were trapped until I freed them. En effet, I believe you're right. But that's not all. Flamel planned to return there a 4th time. He wrote this in the final paragraph, in his handwriting, dated 21st of March 1418. That was the day before he died, Aegis. What if his body died while his soul was traveling through limbo? What if he were trapped, a prisoner in this purgatory? Aegis, because of your unique nature, we have an incredible opportunity. What do you mean, mon père? If the soul that animates you has been bound to the automaton that serves as its vessel, then it can be separated from it too. And if this were the case, the soul would travel to purgatory, where Cagliostro entraps the souls of his victims. Hold on. Are you trying to convince me to go and find Nicholas Flamel? I'm offering you a chance to speak to the man who discovered the Philosopher's Stone. Surely you won't pass it up. Assuming I agree to venture into purgatory, do I even have a chance of finding him there? Certainly. According to this journal, the soul flies to the zenith of the place where it left the body of the deceased. Or that of the pilgrim, in this case. If Flamel's soul is trapped in purgatory, as we've guessed, you'll need to go to the house where he drew his dying breath. Is it still standing? Of course. It's on Rue de Montmorency, in the quartier de l'Hôtel de Ville. You can get there via the cemetery of the Église Saint-Jacques. And how do you plan to free my spirit from this automat? We would simply need to break the bond between them. To do this, we would need to stop your machinery. For a short time, of course. We don't want to lose you, ma chère. As for the rest, it will be a question of mechanics, chemistry, or electric currents, or something or other. Therein lies the problem. This is far beyond my comprehension. But it is fascinating, isn't it? Perhaps Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier could shed some light on the matter. आप बता देंगे आप उनको निकोलस फर्मन्स फाइनल जर्नी, आस्क फॉर साइंटिस्ट हेल्प, मॉन्सियर बेली एंड लवोइसियर से हेल्प मांगनी, वो सब ठीक है, लेकिन ये क्या पर्गेटोरी वगैरह जाने का पता नहीं, साइड मिशन है, ऑब्वियसली अगले एपिसोड में करेंगे अपन। Goodbye, mon père. तो स्लेव्स के बारे में बताते, स्लीपलेस Monsieur स्लेव्स। Raymond. Go on, Aegis.
I went to the Hotel de Massiac as agreed. What I discovered goes beyond your darkest conjectures. The club's members have no intention of merely depriving their slaves of rest. Rather, with the king's support, they plan to replace them with automat harvesters. The Count of Cagliostro is behind the plan. Ma foi. But such a plan would certainly only improve the lot of these unfortunate people. You are mistaken, mon père. If the planters get their way, they will have a greater need of slaves than ever. Only this time, they intend to slaughter them to power their machines. Quelle abomination! Par tous les saints. 4 days ago, the Paris Guard captured 100 black people. They were to be sacrificed as part of an experiment to test the effectiveness of the automat harvesters. Luckily, I was able to prevent the massacre. Where are they now? In a place they call the Dépôt des Noirs. I don't know where it is, but I managed to get the key. It bears the inscription, Tour du Diable. The Devil's Tower is a prison in Vincennes, within the chateau walls. That's 3 leagues from here. We'll only be able to free the prisoners once we're able to move freely ourselves. At least they were spared the fate that the king and his accomplices had planned for them. And what will you do with the 2 servants you employ, Monsieur Raymond? I will continue to treat them well, as I always have. However, under the laws you insist on following, they will become slaves again the moment they leave the kingdom for Saint-Domingue. Certainly not, Monsieur de Robespierre. What kind of a man would I be if what I have heard had not opened my eyes? The planters of Massiac have been proven to be nothing but avaricious murderers. I thought I was dealing with opposition, but now I discover them to be vile enemies, from whom it would be vain to expect any compromise. From this day on, I will fight against their interests with all my strength, and will not lay down my arms until the last slave in the Empire has been freed. Rest assured, then, that the people will fight by your side, Monsieur Raymond. That's the spirit, my friends. Vive l'égalité. Okay, a note from Sleepless Mission to Lafayette asked the scientist help Lafayette. साइंटिस्ट हेल्प अपन को साइड मिशन के लिए चाहिए लाफाइटे से पहले बात करते हैं. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Accuse him, the royal children. पहले royal children के बारे में बात करते हैं. कोई दूसरा साइड मिशन था, फिर accuse him. I spoke with Monsieur Marat and Monsieur Laclos. Ah, the scoundrels. Did you force them to confess? Do you know what they did with the children? They admitted to organizing the ambush at Gros Caillou. Cursed recreants. Cowardly corrupters of innocence. Where are they holding their prisoners? They must be rescued immediately. They do not have Charlotte and the Dauphin. Excuse me? They dare to claim that? It is the truth. The ambush was a catastrophe. The king had gotten wind of your plans. Automats from Versailles slaughtered the kidnappers and seized the children. By now, the children will have been reunited with their father. There is little doubt about that. Mon Dieu. Then it is from the clutches of that tyrant in his own palace that they must be saved. I fear that such an undertaking is doomed to failure, although there is no question of giving up. Monsieur le Marquis, there is a most unfortunate rumor about you going round. Oh, just one, is there? You are accused of having delivered the troops who had gathered in the Place Dauphine over to the king. Calumny. This is nothing less than vile slander. Save your breath, General. The rumor is true. I can prove it. There's no point in trying to defend yourself. I know that you raised the National Guard for the sole purpose of taking command of it. There was nothing spontaneous about the uprising. Do you have any evidence to support your accusations? I do. I have the manifesto. Bon sang. Why resort to this manipulation? You must understand. What I have done, I did for the good of the kingdom. I wanted to stop this massacre while protecting the Queen and the Dauphin. In the name of the people, Aegis. But an actual uprising of the people would have inevitably led to disaster. Only professional soldiers could organize and lead the resistance. Who were your accomplices? My brothers in arms, the brave men of the Régiment de Saintonge.
Veterans of the American War. Men who at the Battle of Yorktown brought an empire to its knees. Alas, we gravely underestimated the enemy's forces. We thought we would face an infantry supported by a handful of machines, but an entire army of automats. It was unthinkable. Some accuse you of harboring a lust for power. The circumstances were to your advantage. These aspersions are all too familiar to me. But tell me, if I wanted the crown for myself, why did I not take it when I returned from America? When I had seasoned troops at my command, and the people sang my praises with one voice? No. That makes no sense. Though I readily admit that I do believe I am worthy of fulfilling an important role for the Queen, after her son is crowned. Lieutenant General of the Kingdom, for example. Or even, if circumstance requires, the Regent. Voila. Now you know everything. I haven't left anything out. However, this truth, if it were made public, would play right into my enemy's hands. So I ask you not to reveal anything I've just told you, and to give me the manifesto. ऐसे मुझे लग तो रहा है वो सच बताया उसने सारा. C'est entendu, General. Here. Aegis, by doing this, you're not saving my honor. You're saving the future of the entire kingdom. Oh, and one more thing. Can you tell me where I can find my detractor? The one who told you the rumors about me? I cannot tell you anything, General. Oh, no matter. I will not let this serpent continue to vilify me. I shall get redress for these aspersions in the end. Do as you wish, General de Lafayette. General, there is an alarming rumor about you going around. Huh. Just one, is there? You are accused of having delivered the troops who had gathered in the Place Dauphine over to the Same. king. I am the storm. What's more, I did not call for the uprising. The National Guard. This was the work of soldiers who rebelled and called on. It was only after they had gathered that the troops on क्या us. अलग है? Right. But tell me, where did you... I cannot tell you that, General. No matter. It's of no importance. I know my enemy. The day will come when I shall... Goodbye, Monsieur le Marquis. Your Dauphine. Having sent a message, Aegis is now waiting for the Queen's instruction. Dauphine के डेथ के बारे में, Queen के सन के डेथ के बारे में, गन पाउडर ट्रेल बास्टील में कंटिन्यू होगा. निकोलस फेमल वाला अपन को अभी इनसे बात करना है, साइंटिस्ट से. And Glory, the time has come to go to Montmartre and speak to Monsieur Maret. Glory and dishonor. Carefully planned. And Marquis was no way responsible for the placed offense. Was Aegis gave him the document. ये अपन ने अभी इसको डॉक्यूमेंट दिया लाफाइटे को. तो अपन को वापस मैरिट से बात करनी है, वो अगले एपिसोड में करेंगे. अभी बेली एंड नवेसर से बात करके एपिसोड रैप करते हैं अपन जल्दी. Monsieur Lavoisier, What can I do for you, Aegis? do you think there is any way to interrupt my internal clockwork? To what end? I would like to briefly sever the bond between my spirit and this automat. It is a very strange request, madame. For what purpose do you seek to free your soul from its shell? According to the abbot, my spirit would then be able to visit purgatory. Oh, that dreadful place. Why on earth would you want to go there? I hope to find answers to some very important questions. You must understand, madame, that your very nature is a mystery to us. We are ignorant as to the principle that imbues you with life, nor do we know how your machinery works. That is why it is impossible for us to make even the slightest alteration. It would mean taking an unacceptable risk. Of course, if we had documents that could shed light on the matter... Antoine, the blueprints. What blueprints, mon ami? Ludia's. Eugène gave them to me when he was working on the modifications ordered by the king. He wanted my opinion on the potential for reducing the size of certain key parts. The documents are obsolete now,
But they could tell us quite a bit about the mechanical principles that are shared by Ludia and Aegis. Bon sang, you're right. Where are the blueprints now? Alas, the situation is not in our favor. I kept them in the safe at the observatory. But earlier, when I went there to collect my most important documents, before setting off for the convent, I found looters making off with its contents. Blasted scavengers. Their kind are always quick to make the most of chaos. I chased them to the quays, but was unable to apprehend them. When they disappeared into an underground passageway under the Louvre, I decided it was best not to follow them. You acted wisely, mon ami. The automats are everywhere, and the marauders don't stand much of a chance. I'll try to track them down. Okay. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Did you find the blueprints that were stolen from me? No, Monsieur. Don't forget that those documents are our only chance to discover what was used to craft you. The looters disappeared into the tunnels under the Louvre and the Tuileries. I find it hard to believe that they were able to escape from that maze safely. Goodbye, Monsieur B. तो अपने पास 2 साइड मिशंस अगेन आ चुके हैं। एक अपन को यहाँ पे विजिट करके मैरिट से बात करनी है एंड दूसरा लुडियाज ब्लूप्रिंट्स। तो अपन अगले एपिसोड में ये ब्लूप्रिंट्स के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है मैरिट के साथ जो साइड मिशन है उसमें जस्ट अपन को से इंटरेक्ट करना है और आगे कुछ है नहीं उधर ज़्यादा। जबकि यहाँ पे अपन को ब्लूप्रिंट्स वापस लाने के बाद फिर पर्गेटोरी वगैरह उधर जाना है एंड कुछ फिलोसोफर स्टोन एंड फिर निकोलस फेमल वगैरह से रिलेटेड, तो वो साइड मिशन हो सकता है थोड़ा लंबा है। तो एनीवेज आज का एपिसोड यहीं पे रैप अप करते हैं। एपिसोड थोड़ा लंबा चले गया क्योंकि एंडिंग में अपन इतने सारे अपने कैरेक्टर से कन्वर्सेशन कर रहे थे, जितने भी साइड मिशन अपन ने रैप अप किए उन सबको एंड कर रहे थे, फाइनल टच दे रहे थे। एनीवेज सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। अभी आई गेस साइड मिशंस खत्म होने के बाद फिर बस अपना बेस्ट ही फाइनल लोकेशन बचा है, तो अपन गेम के काइंड ऑफ एंड जोन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो ज़्यादा एपिसोड्स अब रहेंगे नहीं। So yeah, till then, take care and bye bye.